the equations before solving, Uh-huh. why does it assume that B is not there only? Because if we just look at the calculation part of it, how is it assuming that B is in there? आपने cancel out कर दिया ना उसको add करने पर. When you But cancel that it, happens after also. the after doesn't matter because you have done the analysis. Understand? So you're saying that in the first case we did the analysis assuming B was there, but then in the second case we didn't consider B in the analysis, and actually B takes part in the reactions. Correct. So यहाँ पर जैसे था A goes to B plus C and B goes to say C plus D, right? ऐसा करके कुछ था, correct? Yes, sir. अब the thing is that B is present in this entire reaction. ऐसा नहीं है कि B present नहीं है, ठीक है? In fact, we get an answer to it also. यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ ना, like I will write. Yes, we get some x minus y quantity of it. Correct. 1 0 0 1 minus x x x x x 0 then x minus y x plus y y, right? तो ये x minus y and ये x plus y ऐसा हो गया ना. So there is some amount of b, right? X is not necessarily equal to y. Yes, sir. But when I combine the two, when I do this, I cancel out the b and I write 2c plus d. What is it that I did? I assume that there is You no, added the equation. अच्छा, हाँ. जितना b बना वो पूरा का पूरा कंज्यूम होकर सेकंड रिएक्शन में चला गया. But that's an incorrect assumption, no? ठीक है. So I mean I don't get your thing now, but what I said pehle, that makes sense to me. That pehle, if when we combine after analyzing, we're doing the analysis considering B to be present, and then when we combine before analyzing, we're not considering B in the reaction at all when Right. B is actually taking part. Exactly. Yeah, this combining logic and everything doesn't make sense to me. So can I leave it? Okay. बिल्कुल. Sir, sir, will you be teaching ionic equilibrium again, even in those centers where you'll be teaching offline? Most likely it depend करेगा. See, if the batch that I'm teaching is made up of those students जिनका ionic चल रहा है, like they were all at par, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. Then I will resume from where I have left. ठीक है. Okay, sir. In case that isn't the case, then I'll have to do the cover up. ऐसे तो हुआ ही रहेगा सब बैचेस में स्टार्ट. वही तो इसीलिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. नाउ लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इसका बैकग्राउंड दे दिया था आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का. दैट इसके जो फंडामेंटल्स हैं दे आर ऑल व्हाट यू हैव कवर्ड इन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर. द चैप्टर विल बी मोर अबाउट हाउ टू सॉल्व फॉर डिफरेंट केसेस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम्स. ठीक है. दैट इज प्राइमरीली द क्रक्स ऑफ इट. So now हाँ बोलो. So when you start a chapter, so when do we start making short notes? मतलब 80% of the chapter. हाँ correct. When? 80% of the chapter is done. Okay. ठीक है. Now starting part थोड़ा सा theoretical है chapter का, wherein I would be introducing couple of more terms, introducing some concepts that you are already aware about, but in a bit more detail. तो जो chapter रहेगा primarily इसमें pH calculations होंगी. That is the main objective of this chapter, doing pH calculations of acid solutions, right, of base solutions, of salt solutions, right, or any solution that can be formed by mixing these. Now how do we work with such?
salt solutions and their how do we work with such solutions in pH, वो आपका I think 2 लेक्चर के बाद में स्टार्ट होगा. उसके पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बिल्ड करना चाहूंगा, which is going to be important. That is going to be important in understanding those pH calculations. So we first start with understanding electrolytes and particularly strong and weak electrolytes. Okay, so I assume यहाँ पर that आपको electrolytes और non electrolytes के बीच का difference पता है. हाँ sir. Right? Common salt is an electrolyte because it dissociates into its constituent ions. Say sugar or glucose is an example of non-electrolyte because when dissolved in water, it does not dissociate into ions. It just dissolves, homogeneously spreads around. Salt क्या होता है? Dissolve भी होता है, dissociate भी हो जाता है. That's why it is called as an electrolyte. Now, within electrolytes, you have another classification that is strong and weak. Strong electrolytes are those जिनका K equilibrium constant काफी बड़ा होता है. तो उनका अल्फा कितना रहता है? ऑलमोस्ट 1. ठीक है, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उनको हम लोग ऐसे सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन पार्शियली होता है, लाइक जो इनका डिसोसिएशन का रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरली छोटा वैल्यू रहता है, तो उनको हम लोग ऐसे डबल हेडेड एरो से डिनोट करते हैं. इनका अल्फा वुड बी समथिंग व्हिच वुड डिपेंड ऑन द K. We'll need to calculate. Now in this chapter, going forward, जब आप questions करोगे तो आपसे expected होगा that you know certain common examples of strong electrolytes and weak electrolytes. ठीक है, जैसे कल को मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल pH of 0.1 molar HClO4 solution. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया आपसे, निकाल के बताओ. तो अब HClO4 कैसा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड. फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड होता है, ये आपको पता होना चाहिए. सेकेंड ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक एसिड होता है, विल बी एन एक्सपेक्टेड नॉलेज फ्रॉम यू. ठीक है, दैट कॉमन एग्जाम्पल्स का आपको आइडिया होना चाहिए. From है ना? हाँ, करेक्ट. सो नाउ in order to help you with that, यहाँ पर I have written down some common examples of inorganic acids, strong as well as weak, and I have also written examples of some strong base and weak base. ठीक है, not with an expectation कि आज लिखा है तो आज के आज ही सारा का सारा याद हो जाएगा. Not really, but this will be something that will be a good source for reference in future. जब भी आप बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड यू माइट गेट कंफ्यूज्ड कि अच्छा ये एसिड के बारे में क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो यू कैन क्विकली रेफर बैक टू दिस टेबल. नाउ विद टाइम, आफ्टर मल्टीपल रेफरेंसेस, आई विल अज्यूम, ठीक है, बाय लेट्स से 5th 6th lecture into ionic equilibrium, you are pretty much aware about these common acids and base. ठीक है, तो don't stretch about stress about trying to memorize it on day one. धीरे धीरे याद हो ही जाता है. ठीक है, and it's not a big problem. I have seen students being able to remember this very easily in middle of the chapter. ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं रहता, बट धीरे धीरे आदत हो जाती है. सो आप लोग इनको लिखना शुरू करो. एंड यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स पे मैंने ऐसे स्टार मार्क किया हुआ है, तो आप भी उन पे स्टार मार्क करके छोड़ दो. ठीक है, इस टेबल के नीचे आई हैव इलैबोरेटेड व्हाट दैट स्टार वुड मीन. ठीक है, 1 सेकंड स्क्रॉल अप करो ना. हाँ सर. फटाफट लिखना शुरू करो. So whenever we talk about complete or partial dissociation, it's in water only, no? Yeah. 99% of the questions are going to be in water only as a solvent. I am going to talk about 3 or 4 questions that are there in the booklet where water is not solvent, and how to work on that. उसका मैं basics build करके दिखाऊंगा आपको, but that will be like extra piece of knowledge. So until then, we just consider that dissociation is in water. Yes. Okay.
सर आपने NaCl का और C6H12O6 का एग्जांपल में सर आपने भी like you have shown only one way of going the method reaction. Why that sir? So जैसे NaCl क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, रिएक्शन है इसका के बहुत बड़ा होता है तो इट ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसॉल्व्स, ठीक है। थोड़े टाइम बाद मैं आपको AgCl जैसे सॉल्ट का भी बताऊंगा, उसमें मैं ऐसा दिखाऊंगा। आपको पता है ना AgCl स्पेयरिंगली सॉल्युबल होता है, Yes. उसको मैं ऐसे दिखाने वाला हूँ, बट वो आएगा विद टाइम आएगा। So at the bottom you've written HClO for it. कहाँ पर? Left hand side corner. मैं उसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। ये इतना तो सबने लिख ही लिया होगा ऊपर ऊपर का। हाँ Sir, for strong electrolytes, alpha will be equal to 1 or almost 1? Almost 1. 99.9999999999. approaching 1. Okay, sir. लिखे है सबने? So one Oh, wait. Sir, So you've done arrow and written pyridine. So वहाँ पे मिस हो गया बीच में लिखना। okay. और भी हैं थोड़े से नीचे। सर 2 मिनट के लिए थोड़ा ऊपर जाओ। ऊपर तो ये था ना बस इतना ही, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वो मैं खाली अभी तक केस का ही लिखा था सर, मतलब लेफ्ट साइड का ही लिखा था और फिर बीच में मैं कहा काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, अभी ठीक है। सर आपने FeOH3 एग्जांपल लिखा है क्या? कहाँ पर? FeOH3 is example, right? करेक्ट। डी ब्लॉक के मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स, दे आर टिपिकली वीक बेस ओनली। Sir, why have you put an arrow from aniline and written pyridine?
नहीं नहीं, वो वहाँ अरे राइट इट देयर. बीच में लिख दो, यहाँ पे मिस हो गया. इससे एग्जाम Okay, कॉमन एग्जाम्पल की तरह हाईलाइट करना था. और तो एनालीन के नीचे लिखना है ना. So the acids that you mentioned, are they in decreasing order of strength or something? Or is it a random order? Random. नो आई गेस कि H2SO4 ज्यादा स्ट्रांग है ना सबसे, और वो लास्ट में था. लिख लिया सबने? 1 minute. so 1 minute. So do we have to remember the weak base and weak acid also? All of these, okay. नाउ अब जो पहला स्टार मार्क हो रखा है ऑन H2SO4, उसके बारे में नीचे नोट लिखेंगे. सो H2SO4 के बारे में नोट ये है दैट out of the two ionizable hydrogen that it has, the first one is a strong acid, right? H2SO4 जब पानी में डालते हैं तो it completely dissociates into H plus and HSO4 minus, whereas the second H is a weak acid. It partially dissociates into H plus and SO4 2 minus. Now this information is to be only used or only taken when specified in question. If nothing is specified, then we take the normal understanding with H2SO4 that दोनों के दोनों H completely ionize हो जाते हैं. लिखो इसको. तो अगर कल को आपको कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, समथिंग लाइक वेरी दिस सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का pH बताओ, ठीक है, और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बस इतना दे दिया, तो क्या करना है, आपको बोल देना जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 2 times 0.1 मोलर, ठीक है. यू विल अज्यूम both the H2 completely ionize. However, let's say अगर क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन दे दी है, राइट, इस तरीके से दे दिया है दैट 0.1 मोलर H2SO4 का pH बताओ, एंड साथ में इंफॉर्मेशन दे दिया है दैट द Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो बोलते हैं अपन, Ka2 2 मतलब सेकंड स्टेप का, Ka2 ऑफ H2SO4 इज गिवन फलाना फलाना वैल्यू, ऐसा करके दे दिया. देन द क्वेश्चन इज गिविंग दैट हिंट दैट डोंट कंसिडर the second H to completely ionize. You are given the equilibrium constant for it, solve for it. ठीक है, तो only and only when it is specified in the question, then you have to take this, otherwise assume it to be completely ionizing. So can you scroll up? I have a question. हाँ बोलो. So over here you've written AgCl is insoluble, but then Correct. you said it's sparingly soluble because it does ionize, no? या मतलब वो So then- insoluble sparingly soluble हम लोग interchangeably use करते रहेंगे because there is no strict boundary between them. Very less. ठीक है.
second H will be a weak base, right? नहीं Shrey, choose your words carefully. ठीक है, the second H will say is a weak acid, or you can say the HSO4 minus is actually a weak acid, partially dissociate कर रहा है. ठीक है, लिखा सबने ये? तो H का बाकी है लास्ट सेकंड. So I didn't fully understand the example of the question that you gave. Is it okay for now? हाँ, मतलब अभी आपको क्वेश्चंस करते करते समझ में आ जाएगा. So can you repeat the last part that you said, right? The second is H is less acidic, right? हाँ, the second H is less acidic definitely, and यहाँ पर हम लोग उसको weak acid बोल रहे हैं क्योंकि ये partially ionize होता है. जो पहला H है वो कैसा है? Completely ionize हो गया, तो उसको हम लोग strong acid बोल रहे हैं. हम लोग को पता कैसे चलेगा जब वो पार्शियली हो रहा है या कंप्लीटली? क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, तभी आपको लेना है. अदरवाइज यू अज्यूम दोनों कंप्लीटली जा रहे हैं. ठीक है, देन सेकंड नोट या सेकंड स्टार मार्क पॉइंट वाज फॉर बोरिक एसिड H3BO3. बाय लुकिंग एट द फॉर्मूला ऑफ बोरिक एसिड आपको लगेगा ऐसा कि इसमें से 3 H आयोनाइज होके निकल सकते हैं, राइट? ये H3BO3 का फॉर्मूला देख के ऐसा लगता है, बट इट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी ऑफ दीज H. ठीक है, इनफैक्ट इट इज नॉट अ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड. The way it behaves as acid in water is as per the Lewis acid definition. Lewis acid definition क्या होती है? It can accept electron pairs. Electron pairs. तो जब हम H3BO3 को पानी में डालते हैं, राइट, तो ये वाटर से अपने वेकेंट ऑर्बिटल में, बोरॉन का यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ना ये, इसके 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 खुद के और एक ऑक्सीजन का, तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में. Yes. Yeah. So because of that, it is able to accept electrons from water, and as a consequence, the H plus that comes, it comes from the H2O molecule. तो एक H3BO3 के मॉलिक्यूल से एक H plus रिलीज हो रहा है, राइट? तो इसका बेसिसिटी अगर पूछा जाएगा H3BO3 का बेसिसिटी कितना है, तो द आंसर वुड बी 1, बिकॉज एक मॉलिक्यूल से एक H प्लस निकल रहा है. ठीक है, एंड उसमें भी नोटिस करना, आई हैव रिटन यहाँ पे मोनोप्रोटिक और कैंसिल कर दिया है. व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट मोनोप्रोटिक, इट इज नॉट कंफॉर्मिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ब्रॉन्स्टन लॉरी कि सब्सटेंस H प्लस दे रहा है. इट्स नॉट डूइंग दैट, इट्स एक्चुअली फॉलोइंग लुइस एसिड डेफिनेशन, सो वी कॉल इट एज अ मोनोबेसिक एसिड. समझ में आए? Yes, sir. लिखो इसको भी. Sir, how do we know the released H's of H2O? नहीं तो पता नहीं था ना, इसलिए तो मैंने स्टार मार्क करके बताया है तुम्हें. फैक्ट है. अच्छा. How did you know? Studying chemistry. कुछ तो होगा ना सर. कुछ तो होगा मतलब It's probably in NCERT or something. बुक्स पढ़ के. But how? वही तो. अपने थोड़ा सा Experimentally they saw it, and this is relevant to question solving, so we remember it. नहीं, so I understand this question. See, your like discomfort is कि अचानक से कहाँ से आ गया. नहीं, अचानक से नहीं सर, बट हमें पता कैसे कि ये जो H है वो वाटर का ही है. ये मैकेनिज्म किसी ने स्टडी किया होगा ना. Somebody would have studied that how H3BO3 is giving that H plus. रिएक्शन का आपका रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर शुरू हुआ है ऑर्गेनिक में.
नहीं sir. आइसोमेरिज्म में चालू है। ओके ओके, तो इसके बाद आप एक और चैप्टर पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, नेक्स्ट वही आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। तो उसमें यू विल स्टडी अबाउट द वे इन विच लाइक bonds form, bonds break, something attacking something, something getting released, something getting attached. So yahan par the mechanism which was uncovered was this one, where H2O ka lone pair attacks the nucleophilic site, that is vacant orbital of boron, and forms these products. तो वहां से इलेक्ट्रोफिलिक साइट ना, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक, माय बैड। और आपने वो H को ब्रैकेट में लिखा ना, वो C नहीं है ना, मतलब मुझे समझ रहा तो वही है, पर पता नहीं ऐसे नहीं वो हाँ सी नहीं है, H इज रिलीज्ड वैसा। हाँ, मोनोप्रोटिक वर्ड इज यूज्ड। प्रोटिक मतलब क्या होता है? प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन माने क्या होता है? H+, ठीक है। तो मोनोप्रोटिक मतलब एक H+ दे रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट मोनोप्रोटिक मीन्स। नाउ दिस इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी डेफिनेशन ऑफ एसिड्स, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का डेफिनेशन था एसिड्स का, वो यही था ना, an acid is what gives H+ in a reaction, ठीक है। Yes. Boric acid is not conforming to that definition. It is an acid, but it is Lewis acid, so we use the word monobasic for it. So what does monobasic mean? Accepts one electron pair. More commercial airline. Partial dissociation means that यहाँ का जो इसका जो K है वो क्या होगा? लार्ज, तो ये ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड चला गया। इस इक्विलिब्रियम का K जो होगा वो क्या होगा? स्मॉल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट 100% फॉरवर्ड। हमने ऐसे डबल हेडेड एरो बना लिया, ठीक है। लिखा इतना सबने? Yes, sir. Yes, sir. देन लास्ट वाला जो स्टार मार्क किया था हमने फास्फोरस के एसिड्स पर, उनके बारे में भी लिख लो। दैट फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक इज H3PO4, ठीक है। H3PO4 इज ट्राई बेसिक, और यू कैन से ट्राई प्रोटिक, क्योंकि इसमें तीनों H आयोनाइजेबल हैं। H3PO3, ठीक है, दैट इज डाई बेसिक, या यू कैन से डाई प्रोटिक, क्योंकि इसमें दो ही H आयोनाइजेबल होते हैं। जो एक H फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच्ड है वो आयोनाइज नहीं होता है। H3PO2, ठीक है। अगेन फ्रॉम द फॉर्मूला यू माइट फील कि अरे 3 H है, बट तीनों H आयोनाइजेबल नहीं है, सिर्फ एक ही H आयोनाइजेबल है, ये जो OH वाला H है। जो H डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच्ड है दे आर नॉट आयोनाइजेबल, ठीक है। कैसे पता पड़ता है ये? अगेन यहाँ पर सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, हाँ एक्सपेरिमेंट्स करके पता पड़ जाता है, राइट। जैसे H3PO4 डाला, ठीक है, अगर ये 1 मोल डाला तो इसमें 3 मोल NaOH लगा, तब जाके इंडिकेटर ने कलर चेंजेस शो करे, न्यूट्रलाइजेशन हो पाया। H3PO3 के केस में 2 मोल NaOH डाला और कलर चेंजेस हो गए, ठीक है। H3PO2 में 1 ही मोल NaOH डाला और कलर चेंजेस हो गए इंडिकेटर के। तो वी नो फ्रॉम दैट पीस ऑफ experimental knowledge what the
basicities of these acids are. ठीक है, याद रखना है. हाँ, रेफर केमिकल बॉन्डिंग क्यों लिखा है? अब वो एक्चुअली मैंने बॉन्डिंग में बताया था ये. इनकेस आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पढ़ लिया. Okay, sir. And so other stuff also we've not done chemical bonding. So so you probably will have to say it all. ये हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा विद टाइम. So सर in ये एच के बाजू में रेड में क्या लिखा है? क्रॉस मार दिया वो नहीं होगा. These are not ionizable. ठीक है, जैसे So- ये आयोनाइजेबल है, ये आयोनाइजेबल है, ये भी आयोनाइजेबल है, ये भी आयोनाइजेबल है, ये भी आयोनाइजेबल है, ये भी आयोनाइजेबल है. These are ionizable hydrogens जो OH के साथ में अटैच्ड है. जो डायरेक्टली फास्फोरस के साथ में अटैच्ड थे, these are not ionizable. ठीक है, यहाँ पे रीजन जो एट्रीब्यूट किया जाता है is because of less electronegativity difference between H and P. The bond is less likely to be broken by water molecules. So could you repeat that? ये जो फास्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड H है ना, उसके पीछे रीजन, वैसे तो बहुत सारे रीजन है, मल्टीपल रीजन है साइटेड. वन ऑफ द रीजंस दैट इज साइटेड इज बिकॉज ऑफ द लो डेल्टा En. वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है? वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है ना, तो इट वुड वांट टू इंटरैक्ट विद अ पोलर बॉन्ड. बट यहाँ पे P और H के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, इसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते हैं. लिखा सबने इतना? यस सर. So wait, sir. लास्ट वाले पे सर एक ऑलराइट. सर हम्म, अपने वो 3, 2, 1 लिखा है उन दोनों के बीच में, वो क्या है? बेसिसिटी. ओके ओके. So can you explain the reason why only few of the H are ionizable and some of them are not? अरे बैकग्राउंड में बहुत नॉइस चल रहा था, मुझे आधा समझ में आया, आधा नहीं आया. क्या बोला? दोबारा बोलो. So can you explain again? एक्सप्लेन अगेन. H3PO2 कुछ तो. H3 Why? ये No, जो no. डायरेक्टली अटैच्ड है ना फास्फोरस से, बिकॉज ऑफ द लो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन H एंड P. ये बॉन्ड्स वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक नहीं करते हैं और ये ब्रेक नहीं होते हैं. These are not acidic hydrogens. Okay. ठीक है. क्लियर सबको ये? Yes, sir. So when you were explaining, you said that we can call it triprotic or a tribasic. But then isn't there a difference? How can a substance be triprotic and basic? नहीं, वो तो अपन ने पढ़ते हैं ना. All Bl acids, Bronsted-Lowry acids, are Lewis acids also, but not vice versa. Why? Because the Lewis acid theory is superior theory. The Bronsted-Lowry theory was based on H plus. Yeah. So where can this accept an electron pair? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल say HCl है ना,
Yeah. So HCl is a Bronsted and Lowry acid. Yeah. Because it will be giving H plus and Cl minus. Yes. Okay. It is also a Lewis acid. How? Is it a Lewis acid? यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसमें Yes. से इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लिया ना Cl ने अपने पास. Yeah. ठीक है. लुइस एसिड होते ना एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. Yeah. So this is conforming to both the definitions. So, but the molecule itself is not accepting an electron pair, no? No, the molecule is. यहाँ पर ये जो electrons थे HCl molecule के, right? ये electrons इसने अपने पास खींच लिए. Yeah. ठीक है. Okay. Mm-hmm. So this is conforming to the definitions of Lewis acid as well. ठीक है. However, let's say अभी अपन ने H3BO3 का example देखा. ठीक है. H3BO3 के example में it only conformed with Lewis acid definition. Electron pair accept हुआ. ठीक है. But इसने H plus थोड़ा ना release करा. No, it didn't. So it conformed to the definition of only Lewis acids. So see the way in which the acid-base theories go. Arrhenius theory was the one that came first. It was the most primitive version. आपने सुना होगा ना Arrhenius theory. I'm sure theories आपने पता. ठीक है. Then came Bronsted and Lowry theory, which was a better version. Right? Arrhenius theory क्या बताता था? Arrhenius theory was acid is what gives H plus ions in aqueous solution. हाँ, H plus in aqueous solutions. Then Bronsted and Lowry was like कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है aqueous solution जैसा. In any reaction, even अगर gas phase में मान लो reaction हो रहा है, NH3 gas plus HCl gas is forming NH4Cl. ठीक है. Then also we can say like HCl is acid, doesn't need aqueous solution. It was a superior version. ठीक है. That in any reaction, if the substance is giving H plus, it's acid. Right. However, then that definition was only restricted to substances that were giving H plus and accepting H plus only. So a better version, a better theory came, which was this Lewis theory, which was a more robust version based on electrons. ठीक है. भले ही H हाइड्रोजन जरूरी नहीं है हर मॉलिक्यूल में या हर केस में हो. ठीक है. But electrons तो होते ही होते हैं. Chemistry is all about electrons. So that is where Lewis theory is a more fundamental theory. And it's a more robust theory in describing acids and base. So Lewis theory says, आपने पढ़ा ही होगा ये. So can you explain the HCl example again? HCl में यहाँ पर HCl में H plus release हो रहा है, तो it is giving you the Bronsted and Lowry definition of acid, है ना? यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये HCl में क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने पास खींच रहा है ना क्लोरीन. But the electron pair should be like accepted by the entire molecule. नहीं, so यहाँ पर भी molecule ही है ये HCl का, which is accepting that electron pair, but it is like accepting the electron pair by releasing the H plus, like taking that electron pair from itself. So this is how it is conforming to the definition of like the way in which it will happen. ठीक है. मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था, मैंने अभी थोड़े नीचे ही आपको ये बताऊंगा. Like this is how I'm going to write the reactions going forward. At least sometimes this is it how it is going to be. ठीक है. तो ये जो H2O है, ठीक है, ये इस H plus को एक्सेप्ट कर रहा होगा. ठीक है. और ये H3O plus बना रहा होगा. ठीक है. तो थोड़ा सा रुक जाओ, फिर मेरे को नीचे आ जाने दो, वहां पे मैंने लिखा भी हुआ ये सब. Sir, in H3BO3 reaction, water should be a Lowry Bronsted acid, no? Water is okay in this reaction. Yes, sir. ठीक है. When we say H2O is going to be a Lewis base. ठीक है. How? Because it is going to give its lone pair, electron pair to H3BO3.
ठीक है. Okay, sir. But H plus is coming from water, no? हाँ, H plus is coming from water because of that bond breaking that is happening. ठीक है. So that is why यहाँ पर as per Bronsted and Lowry definition हम लोग जाएंगे तो confusion create होता है. Bronsted and Lowry theory के हिसाब से हम लोग कैसा कर रहे हैं, जैसे if I say talk about a simpler example, ठीक है, something like जैसे मैंने HCl के बारे में बात करी, HCl plus H2O giving Cl minus plus H3O plus, है ना? Yes. तो यहाँ पर gives H plus, तो ये क्या हो गया, एसिड, accepts H plus, तो ये क्या हो गया, बेस, राइट? Yes. क्योंकि एसिड बेस लाइक साथ में रहेंगे ना. Yes, sir. रिएक्शन हो रहा है तो एक एसिड और एक बेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको एसिड बेस रिएक्शन के लिए. तो दिस इज प्रीटी नॉर्मल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी गुड. लाइफ इज गुड. Bronsted and Lowry are happy that their definition is working. Correct? Yes, sir. ये यहाँ पर आए तो Bronsted and Lowry की डेफिनेशन क्वेश्चन हो गई कि अरे H प्लस तो आ रहा है, लाइक एसिडिक नेचर आ रहा है, मतलब सोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, उससे H प्लस रिलीज हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, राइट? बट लाइक वो जो डेफिनेशंस थी हमारी वो थोड़ा क्वेश्चन में आ गई, है ना? क्या क्वेश्चन में आ गई यहाँ पर? Nothing is accepting the H plus. राइट. देयर इज H प्लस कमिंग आउट, समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, राइट? सो दैट इज वेयर द ओल्डर थियोरीज गेट क्वेश्चन एंड द न्यूअर थियोरीज इवॉल्व. सो मोर रोबस्ट वर्जन दैट केम वाज लुईस थियोरी. ठीक है. Yes, sir. Now let's talk about this next important concept, comparing strength of acids and base. This is something जो आपने GOC में भर भर के करा होगा. Yes, sir. हाँ, sir. Oh, ठीक है. Now so that's all we did. अब इसमें couple of things that I would want to add. ठीक है. GOC में जो आपने करा होगा that would have been all subjective analysis. ठीक है. That HClO4 में और HClO3 में कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, राइट? HCl में और HI में कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, लाइक बेस्ड अपॉन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशंस दैट यू वुड हैव कम अक्रॉस, subjectively you would have been able to comment upon which is stronger acid, which is weaker acid. ठीक है. वो सब मैं यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूँ. That already you have done enough in your GOC part. यहाँ पे I'm going to clarify a couple of things. The first thing which I'm going to clarify over here is that strength of acids is not compared based on pH values. pH values are used for solutions. ठीक है. That is actually what pH values are used for. So जैसे for example है, if I take a very dilute solution of HCl, it may have a pH of say 6, which means that the solution is weakly acidic. ठीक है. HCl is not weak acid. By definition, HCl is a strong acid because HCl, whatever small amount it was in water, would have completely dissociated into H plus and Cl minus. So the acidic strength is not based upon pH, it is actually based on its tendency to give H plus, right? And this tendency to give H plus is something that we quantified in terms of the equilibrium constant. If equilibrium constant is very large, then the tendency to give H plus is quite high. Alpha is almost 1. We call such acids as strong acids. If acid dissociation constants, the equilibrium constants, are small values, then the tendency to give H plus is less, alpha is less than 1,
we call such acids as weak acids. ठीक है? Yes. ये चीज Sir, can you please repeat this? Acid dissociation constant is the equilibrium constant for this dissociating acid, right? Like Yes. H+. Yes, वही मैंने यहाँ पे नीचे like एग्जाम्पल भी दिया है. ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा उसके लिए. Sir, can you please re-explain this example? हाँ, लिखो ना, लिखते लिखते समझ में आ जाएगा. सर सोल्यूशन में तो दोनों होता है ना, एसिड और बेस, तो फिर पीएच वैल्यू से पता चलेगा क्या कि वो एसिड या बेस है? एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है, और उसके नंबर से स्ट्रेंथ उसकी पता चले. करेक्ट. Sir, acid dissociation constant is actually equilibrium constant, no? Okay, sir. So could you scroll down a little bit? One sec. अच्छा. लिखा इतना सबने? Yes. So 1 minute, last line. 6 लिखा है ये. लिखा सबने? Yes, Yes, sir. sir. Yes. So last paragraph only. So example का equation क्या था? हाँ, नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा ना उसके लिए. हाँ, yes sir. नीचे स्क्रॉल कर दें? Yes. ओके, तो ये लिखो like CH3COH aqueous giving CH3CO minus aqueous plus H plus aqueous. तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, CH3CO minus का concentration into H plus का concentration upon the CH3COH का concentration, that is called as Ka. Ka or acid dissociation constant, right? Greater the Ka, greater will be the dissociation, right? Stronger will be the
acid. We also So- define something called as pKa. So pKa is minus log of K. We do that for mathematical convenience. ठीक है, typically K values जो रहते हैं वो छोटे values रहते हैं. जैसे acetic acid का K जो है वो roughly 1.8 into 10 की power -5 है. ठीक है, तो बार बार इतना डिटेल मेंशन करने की जगह इसका pK लिख देते हैं. pK हो जाएगा 5 minus log 1.8 which is around 4.74. तो this is a more easy to tabulate values. तो ये for mathematical convenience है. So equilibrium constant like for basic something is there, or like we just take it vice versa for this. Sorry, opposite for this. नहीं है ना, अभी बात करेंगे अपन उसके बारे में. ये बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb के बारे में बात करेंगे. Yeah, okay. पहले इतना लिखो. VOC में एकदम खाली बेसिक क्या है इसका Ka का. करेक्ट. तो बेसिक किया, मतलब इसमें कोई नया चीज क्या हो गया? जस्ट आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है. अब वो एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ka कह दिया, एसिड डिसोसिएशन के. Sir, so here Ka will be same as Kc, no? हाँ, सॉरी. लिखा सबने? What have you written towards the right? Yes, sir. The part which is राइट not. वाला पार्ट मैं बाद में बताऊंगा. राइट वाले पार्ट को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा. पहले जितना है स्क्रीन पे उतना लिख लो, Better. Done, sir. है ना? Sir, is it important that Ka value should be related to H plus? मतलब कोई एसिड H plus भी रिलीज नहीं करते. हाँ, तो उनका K बहुत छोटा होगा ना. तो एग्जैक्टली वही चीज जैसे मैंने यहाँ पे बताई कि जैसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, ठीक है, उनके K के वैल्यूज लार्ज होंगे. ठीक है, तो उनका डेटा क्वेश्चन में मिलेगा भी नहीं. जैसे आपको बोला कि HCl सोल्यूशन है और pH वगैरह निकालो, तो उसमें HCl का आपको K वैल्यू देंगे ही नहीं. ठीक है, ऐसा हो जाएगा 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन, है ना, और बोला जाएगा pH निकालो. तो आप बोलोगे कि ठीक है, मतलब इसमें K वगैरह का क्या जरूरत है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाएगा. तो जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 0.1 मोलर ही रहेगा. इंप्लाइज pH जो है वो 1 हो जाएगा. ठीक है, यू विल नॉट बी गिवन K वैल्यूज. बट लेट्स से द क्वेश्चन इज अबाउट वीक एसिड. ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, 0.1 मोलर CH3COH सोल्यूशन है, एसिटिक एसिड सोल्यूशन है, इसका pH बोला है निकालो. तो उसमें क्या करना पड़ेगा? K देना पड़ेगा. K ऑफ CH3COH मिलेगा. फिर आप उस K से इक्विलिब्रियम सॉल्व करोगे, इक्विलिब्रियम से बताओगे कि इक्विलिब्रियम पर H प्लस कितना आएगा, एंड देन उससे आप आंसर निकालोगे. Sir, what about boric acid? pH निकालना मतलब स्ट्रेंथ हो गया ना, इन शॉर्ट एसिड और बेस का. नो, दैट इज सोल्यूशन का स्ट्रेंथ. अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, मान लो 0.1 मोलर एसिटिक एसिड की जगह 0.2 मोलर एसिटिक एसिड डाल दिया, तो pH चेंज हो जाएगा ना सोल्यूशन का. So, but you haven't actually told us what pH is. How Yeah, did like 0.1 molar it's lead not to? 100% clear कि फाइन क्या करना है एक्चुअली. Correct. pH is related to, pH is equal to minus log of H plus concentration. Sure. ठीक है, that is what pH is. मतलब ये तो I thought कि पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में. No. So no sir. कोई नहीं, चलो लिखते जाओ, फिर आ जाएगा अभी थोड़ी देर में. So you didn't generally not reported in question. स्ट्रॉन्ग एसिड्स का K वैल्यूज लार्ज होंगे, तो दे विल नॉट बी रिपोर्टेड. आपको क्या अज्यूम करना है कि लार्ज है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है, तो उससे कितना H प्लस आ रहा है वो समझ में आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, सिंपल मोन एनालिसिस करके. ठीक है, वीक एसिड के केस में K वैल्यूज आर स्मॉल. दैट मींस यू विल हैव टू सॉल्व फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ दैट वीक एसिड, कि उससे कितना H प्लस आएगा बेस्ड अपॉन इट्स K वैल्यू, एंड देन डू व्हाटएवर नेक्स्ट calculations are required to be done.
So is it generally not repeated in question or Q is different? नहीं, question. वरना तुम रिएक्शन क्वेश्चन से कंफ्यूज कर दोगे। नहीं सर, उतना समझता है। इसके नीचे फिर बेस का भी लिख लो। That similarly for base we have base dissociation constant, इसको हम Kb से represent करते हैं। तो जैसे ये बेस का एग्जांपल हो गया अमोनिया, या अमोनिया एंड वाटर इज NH4OH ओनली। ठीक है, तो NH4OH गिविंग NH4 प्लस OH माइनस, तो इसका Kb इस तरीके से लिखा जाएगा। Greater the Kb, stronger will be the base, right? We also define something called as pKb, right? Generally P small होता है, ठीक है। pKb is equal to minus log Kb, and यहाँ से समझ में आएगा that lesser pKb means stronger base. So, what had you written outside the blue curly bracket on the top? बताऊंगा अभी मैं। Okay. Sir, P will represent minus log, no? pKb is equal to minus log Kb. Okay, sir. So what does P mean? ऐसा कुछ मतलब होगा कुछ लैटिन यार, मतलब So this whole chapter might be constituting reactions in aqueous solution only, right? Correct. Because like dissociation के लिए कुछ तो substance चाहिए. Yeah. तो वो चीज मैं वही हाईलाइट करने वाला हूँ अभी। इतना लिखा सबने? एक सेकंड सर। So here we are seeing how much OH minus is released. Sorry? So here we are seeing बैकग्राउंड how नॉइज बहुत है। चैट पे लिख दो। हाँ, यू कैन ऑल्सो, सो यहाँ पर इट इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ कि कितना H प्लस एक्सेप्ट हो रहा है। अभी मैं थोड़ी देर में ये भी लिखने वाला हूँ। लाइक राइट हैंड साइड पे एक्चुअली वही है, ये वाला इक्वेशन। तो यहाँ से आपको पता पड़ेगा दिस इज गिव्स H प्लस, सॉरी accepts H plus. So what is the tendency to accept H plus? ठीक है। सर वो एक सेकंड स्क्रॉल डाउन करो। लिख लिया इतना सबने? Nice, the last example. So for strong acids, we just assume alpha is equal to 1 and we solve now if K is not given. हाँ, you assume complete dissociation. डन सर। ठीक है, अब ये जो राइट में लिखा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है सर 1 मिनट सर, वो लास्ट एग्जांपल का लास्ट लाइन पढ़ना है। कितना स्लो है यार तुम लोग, मतलब नींद में चल रहे हो क्या अभी? हो गया सर, वो एक वर्ड रह गया था। अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस करना, लेट मी एक्चुअली जूम आउट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये पढ़ाया है। ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव टॉट टू यू। दिस इज द इजी इंटरप्रिटेशन, सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसिड डिसोसिएशंस एंड बेस डिसोसिएशंस। ठीक है, अगर आप लाइफ आसान रखना चाह रहे हो, ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय इजी लाइफ? दैट जेई मेंस के सारे सवाल हो जाएंगे, जेई एडवांस के भी
90% से ज्यादा सवाल हो जाएंगे। तो दिस इज द साइट फॉर यू, ठीक है, दिस इज इजी। इसमें आपको आई डोंट थिंक कोई कॉन्सेप्चुअल दिक्कत आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन करके लिखा हुआ है, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। एंड दिस माइट irk you a bit, you might be feeling a little uncomfortable about it, and you will know why, ठीक है। but this is building a base towards the questions that what if solvent changes, ठीक है। instead of water, if you have some other solvent, then how do we deal with it? अब the thing is कि पूरी बुकलेट में there are only 2 to 3 questions, I think 3 or 4 questions होंगे max to max, जिसमें solvent change कर दिया है, ठीक है। otherwise it is 99% case assumed, 99.9% I would say assumed that water is solvent, ठीक है। water is solvent, easy life, कोई लोड नहीं है, इतना समझ लिया, बहुत सिंपल है, कहानी आगे आ पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं बस थोड़ा सा परेशान करने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड वो मेरा परेशान करने का रीजन इसलिए है बिकॉज मुझे लगता है कि शायद वी हैव पोटेंशियल रैंकर्स इन दिस बैच, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, विच इज रिलेटेड टू एम्फसाइजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करना, व्हेन यू विल रीड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स माने जैसे फॉर एग्जांपल आप एटकिंस पढ़ोगे, ठीक है, या और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्स्ट बुक्स होती है, तो उसमें जब ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स के बारे में बताया जाता है, तो द रिएक्शन इज रिटन इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है, इन अ मोर इलैबोरेटिव मैनर, हाईलाइटिंग वाटर आल्सो, ठीक है। CH3COH यहाँ पे gives H plus, H2O accepts H plus, ठीक है। इस तरीके से इलैबोरेटेड मैनर में रिप्रेजेंट किया जाता है, CH3COH H2O giving CH3CO minus aqueous plus H3O plus aqueous, ठीक है। H plus इन वाटर को H3O plus लिख देता है, ठीक है, बिकॉज वाटर के अंदर H plus जो है वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लाइक ऐसे H plus वाटर में प्रेजेंट है, तो H2O को चूल रहती है कि अरे तू लेना भाई मेरा इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाते ना अपन, प्रॉब्लम क्या है। तो H plus in water exists in form of this hydronium ion only. Now इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, CH3CO minus into H3O plus का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन, एंड यहाँ पर मैं H2O को भी हाईलाइट करूंगा। टिपिकली यहाँ पे हम लोग क्या बोल देते हैं, लिक्विड को एक्टिविटी 1 डाल देते हैं, यस सर, ठीक है। But यहाँ पे I would highlight it. Why do I want to highlight it? Because in case the solvent changes in future, I want to distinguish the difference for you. ठीक है, तो we'll not like remove it, we'll highlight it. ठीक है, so we Same highlight question. Wait. So Wait. So we'll highlight it. Now we move on to the next thought process, which is H2O is solvent. Solvent is in large quantity. तो जो solvent का concentration है, that is almost unchanged. Now because this is almost unchanged, this is a constant only, तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, अभी लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा, यहाँ के इक्विलिब्रियम के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। एंड कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट बोल दूंगा, विच इज व्हाट वी हैड डिफाइंड एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, ठीक है।
तो Ka will be the same expression जैसा हमने पढ़ा था. ठीक है. So, why have I done this? Why have I done this? Because in general जो भी आपने K values पढ़े होंगे, right? आप लोगों ने शायद कुछ एग्जाम्पल्स देखे होंगे या you might have come across some tabulated values of K. ठीक है, कहीं किसी टेक्स्ट बुक में. So all those values, they are keeping in mind H2O is the solvent. If the solvent changes, then those values also would change. But as I said, 99.9% ऐसा नहीं होगा. हमारा मेंस में तो कभी नहीं होगा. एडवांस में भी, as I said, 99% चांस है कि नहीं होगा. Water will be taken as solvent. It's just that 1% केस कि अगर कल को सॉल्वेंट चेंज करके कुछ और चीजें करी जाए तो कैसे उसको हाईलाइट करना है, उसके लिए आई एम बिल्डिंग द बेस फॉर. ठीक है. So previously we ignored H2O concentration, saying that its activity remains constant because it's a liquid. करेक्ट. Here we are ignoring it हाँ, तो because आपको क्वेश्चन में यही डेटा मिल रहा था. This was the data that was given to you always. but then suppose if we had some organic solvent, what Correct. would change in this whole process over here? ये H2O का concentration. So then the value of K would change. प्योर वाटर का, हाँ, प्योर वाटर का, या आपने पढ़ा है ना मोलारिटी कितना होता है, 1000/18 मोलर लेते हैं हम लोग. पढ़ा था कभी? 55.55. हाँ, 55.55. So, but this concentration that we talk about is a standard state, no? No, it's in one, like, स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम लोग. इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पर दैट इज व्हाट आई सेड कि इसके पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग यही करते आ रहे थे, राइट? Yeah. This is what we are comfortable with. Yeah. ठीक है. And nobody had any problems, so to say, when I did this and went on talking about details, right? Life is good. Yes. अभी मैंने क्या बोला है कि मैं थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा हूँ because I want to highlight this. I want to highlight water as a solvent. So that is what I am doing over here. ठीक है. The thing is that you don't need to bother about this thing, all of this thing. ठीक है. ये सब हटा दो. आपको बस इतना पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये के मिल जाएगा और ये के को इस तरीके से लिखना होगा. सर वो तो लिख लिया पहले, लेकिन है ना? करेक्ट सर. तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं. अब ये यूज कैसे आएगा, लाइक हाउ विल दिस यूज, वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही बता पाऊंगा ना ज्यादा अच्छे से, जब मैं सॉल्वेंट चेंज करूंगा तो वो थोड़ा सा. When will that happen? हाँ, When will that happen? नेक्स्ट क्लास. Okay. So then we just note this down for now. Yes. Okay. There's no So can you conceptual explain difficulty in the, this. can you explain the 1000/18 thing, please? वो आएगा नेक्स्ट क्लास में. Okay. Here you said that you're highlighting the concentration of H2O, but the value still remains 1. Do we consider it as 1 only? वो 1000/18 लेंगे, मैं बताऊंगा, रुक जाओ. So for now we write it and then after next class we'll understand it better. हाँ, मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे समझ में आएगा. So why have you written that same as H plus? हाँ, because H plus in water exists in form of H3O plus only. Okay. हाँ दिव्यांश, वो मैं हाईलाइट करवाऊंगा, इसीलिए आई एम जस्ट बिल्डिंग टुवर्ड्स इट.
लिखा इतना सबने? Yes, sir. So all of the square brackets just represent concentrations again, right? ऐसे ही बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में भी लिख लो, अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दिख रहा है अभी ऊपर का भी? सर तो हमारे के इक्विलिब्रियम जो है वो नॉर्मल केस ही है, और फिर के बी इज के इक्विलिब्रियम इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, राइट? करेक्ट, तो कांस्टेंट टू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। यस। So, for all liquids, isn't this activity 1? Like, so. So like any kind of solvent will be a liquid or something, right? Right. So how does that make any difference to the K value at all? If you pointed this out, but like, थोड़ा सा रुक जाओ, fine, sir. अगली क्लास में मैं एग्जांपल दूंगा। लिखा है इतना सबने? हाँ सर। ओके, क्लियर सबने? Just last line, sir. So, I asked you before a question that in the base representation, we see how that OH is released. So, depending on that, we decide how basic it is, right? So, you gave an answer about accepting H plus or something. I couldn't hear you properly. Can you repeat that? So, जैसे एसिड का स्ट्रेंथ हम लोगों ने बोला is the ease with it gives H plus. Yes, sir. Now Bronsted and Laurie में base का definition is about base is the ease with which it accepts H plus. ठीक है, यहाँ पे it is also looking like giving OH minus. Correct? So that is also correct way of saying कि हाँ OH minus दे रहा है. However, that is the Arrhenius definition. कि base is something that gives OH minus. What we will be primarily focusing in this chapter will be the Bronsted-Lowry definition that base is going to accept H plus. ठीक है, so I would want to build you or make you also think from that perspective as well. So in the example that you gave about NH4OH dissociating into NH4 and OH minus, उसमें H plus किधर मतलब accept करता है? ये अमोनिया जो है वाटर के साथ में इस तरीके से करता है कि ये H plus accept कर रहा है और ये वाटर जो है वो H plus दे रहा है।
So in the previous one where you did not show H2O as a solvent अलग से towards the left. इसीलिए तो मैंने कहा ना उसमें दिखने में दिक्कत आ रही है ना, ये इसका डिटेल्ड वर्जन है. Okay, okay, got it. Done. ठीक है, लिखा सबने? Now, put in the next heading, amphiprotic species and conjugate acid-base pair. So example के लिए जगह छोड़ी गया. No need. कौन से एग्जांपल के लिए? The one which you told that you'll give tomorrow, right? For the अगले क्लास में आ जाएगा. वो है नोट्स में नीचे. Yes for it. आपने ऑफ लिखा है कि एंड लिखा है? And amphiprotic species and like conjugate acid base pair का concept ये हम लोग अभी पढ़ेंगे. And this is based on the Bronsted-Lowry theory. Right? That is the focus of this chapter. तो यहाँ पे नोटिस करना, जैसे हम लोग एसिटिक एसिड इन वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने नोटिस किया एसिटिक एसिड जो है वो H+ दे रहा है, तो इट इज ब्रॉन्स्टेन-लॉरी एसिड, एंड H2O जो है वो एसिड वो H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट इज ब्रॉन्स्टेन-लॉरी बेस. ठीक है. Now, when you look at the products and look at the reaction happening in the backward direction, तो क्या हो रहा है? CH3CO minus H+ accept कर रहा है, तो CH3CO minus is acting like a base. Yes, sir. And we call it conjugate base of CH3COH. H3O plus H+ दे रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes. We call it as acid. ठीक है, we call it as conjugate acid of H2O. Similarly, you notice another example. Let's say ammonia in water. तो ammonia in water में क्या हो रहा है? यहाँ पर NH4 plus and OH minus form हो रहा है, यानी कि you can see that ammonia is accepting H+. That means it is acting as a base, and H2O is giving H+. So it is acting as acid. Sir, please scroll up a little bit. 1 second. Then, Sir. if you focus on the right hand side, please don't disturb me. Okay. Ammonia and OH minus में you can see ammonium ion NH4 plus is giving H+. Yes. So it is acting as an acid. We call it as conjugate acid of ammonia. OH minus क्या कर रहा है? If I look the reaction in the reverse direction, It's accepting H+. it is acting as a base. So we call OH minus as conjugate base of H2O. Also notice करना that we can see that H2O can give H+ as well as accept H+. So we call such substances as amphiprotic substance. You might want to use amphoteric word also for H2O, but there is a small distinction between the two which I would want to highlight. ठीक है, इतना लिखो, फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे. हाँ, अभी क्या डाउट पूछ रहे थे तुम?
लिखा सबने? Yes. No, हाँ sir. सर। One One minute. minute. Done, sir. Done, sir. ओके, नाउ यहाँ पे ये एम्फोटेरिक एंड एम्फीप्रोटिक दोनों वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं. नाउ amphoteric word means that a substance can behave as acid as well as base. Amphiprotic also means that the substance can behave as acid as well as base. However, the distinction is amphiprotic is based on Bronsted and Lowry definitions of acid and base. That means amphiprotic substance can give H plus as well as accept H plus. Okay? Whereas amphoteric word is based on the Lewis acid base definitions. So an amphoteric substance would be accepting electron pair as well as capable of donating electron pair. ठीक है? समझ में आई? Yes. Yes. So can you explain again the difference? एम्फीप्रोटिक वर्ड का मतलब का मीनिंग होता है एसिड की तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह भी बिहेव करेगा, राइट? बट व्हाट डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस डज इट कंफर्म टू? Bronsted and Lowry definition. Bronsted and Lowry definition for acid gives H plus, base accepts H plus. So if a substance is able to do both, then it is called as amphiprotic. Yes, sir. Amphoteric word also means that a substance can behave as acid as well as base, but the definition it conforms to is Lewis acid base theory. So that means if a substance can give electron pair as well as accept electron pair, then it is amphoteric species. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपने पढ़ा है एम्फोटेरिक स्पीशीज होता है. Yes, sir. Right, so this is amphoteric because it can accept electron pair. ठीक है, ये ऐसे OH माइनस के साथ कंबाइन होकर ZnOH3 माइनस भी बना देता है. ठीक है, एंड it can also give electron pair. तो यहां पर you can notice that H plus का give and take नहीं हो रहा है, तो it is not conforming to
Bronsted and Lowry definitions. So it is not amphiprotic. We are not calling it amphiprotic. What are we calling it? Amphoteric. Amphoteric. It conforms to the Lewis acid-base definitions. So can you keep that? So I was disconnected. Can you just quickly tell what this example was? We have some bright candidates among us who would reiterate what we have just learned. Do you want me to explain the example? Yeah. Yeah, so ZnOH twice when it reacts with water, we've not shown the H plus in this reaction, but that's water. It can accept the electron pair as OH minus. When it accepts the OH minus, it's technically accepting the electron pair. Then it So it becomes is acting as a Lewis acid. Yeah. So that becomes ZnOH thrice minus. So that's a Lewis acid. But then when ZnOH twice dissociates to ZnOH plus OH minus, technically the same thing has happened. It has lost an electron pair, hence the plus. Yeah. The OH took an electron pair from the molecule and escaped. So that's why it has lost. Whole twice can give electron pair as well. Yeah. So it's a Lewis base. Okay, got it. So we don't have such a definition for the Arrhenius theory, right? Arrhenius theory is like quite primitive. Okay. ठीक है लिखा सबने क्या? Yes. Yes. Okay. Quick practice of conjugate acid base pair as well. ठीक है यहाँ पर I have certain examples. Just a minute. Okay. So conjugate acid base pair, okay, they differ by one H plus only. So let's quickly practice it. Say H2O, it acts as acid. Then its conjugate base is OH minus. Yes. Yes. Because H2O acts as acid, मतलब H2O gives H plus. तो उसके बाद जो बचेगा, that will be its conjugate base. ठीक है? H2O can act as base as well, like it can accept H plus also. And as a consequence, H3O plus. H3O plus, very good. H2SO3, sulfurous acid. It is acting as acid. तो इसका conjugate base क्या होगा? HSO3 minus. Correct. So not SO3 2 minus, it will be HSO3 minus. Why? Because conjugate acid base pair, they are going to differ with one H plus only. हाँ, अभी ये HSO3 minus, it further acts as acid. It loses another H SO3 2 minus. Right. तो इसका conjugate base आएगा SO3 2 minus. ठीक है? HSO3 minus can also accept H plus. It can act as a base. Yeah. H2SO4. H2SO. उसका conjugate acid will be H2SO3. H2SO3. Yeah. ठीक है? What about this H3O plus acting as a base? इसका conjugate acid क्या होगा? Sorry, acting as acid. Conjugate base क्या होगा? H2O. Very good. Last one. H2O. ठीक है. I hope सबको समझ में आया है. किसी को नहीं आया तो डाउट पूछ लो. इसको कॉपी कर लो. सर ये हमको इसमें भी था जीओसी में, वो एकदम बेसिक था पर ये भी बेसिक ही है. हाँ ऐसा ही था सर, मतलब फ्रैंकली
So you just wrote that HSO3 is a base. Why write it as an acid? That's under that. मतलब कहाँ पर? So under H2SO3 within HSO3, right? HSO3 minus is an acid only, but it is the conjugate base of H2SO3. Okay. HSO3 is amphiprotic, no? In one case, it's accepting the electron pair. It based on the reaction, right? One Yeah. place is acting as a base, one place is acting as an acid. Yeah. Sir, below H2SO3, it's HSO3, no? Why have you written H2SO3 and HSO3 minus amphiprotic? Because it is. But both of them are acting as acid only. Oh, sorry. मैंने तो वही बाय मिस्टेक नीचे के दो की तरह. ये ठीक है. चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो. So D. A. So it's A. A. Yes. Sorry, yeah, A. No. So how Will be can it be C. A? Yes, It's sir, it D. will be C. Yes, C. No, it's D. It's D. Wait. Don't It's say. D, man. It's Why don't D. you just think first and then This even C. answer? No, D it's is C. It's red. C. The answer is C. No, I think final, it's Why is final it? answer is It's C. C. Because it accepts Final. electron pair. See, you have to remove an H plus so that it can accept an H plus. So when you remove an H plus, it becomes C. And yeah, the H2 for whole 5 goes to 4, right? Wait. No, But no, then it's what about D. O also? Wait. First think and then come up with an answer and then say it, no? Yeah, that's right. So just 1 minute. Don't tell us the answer. So the answer is D. So lock kiya jaye for 7 crore rupees. Sir, C. So it's D. Because when you just imagine a H2O, say you remove an H plus, so it becomes OH minus. So firstly, a positive charge should decrease. Yeah. Yes, sir. It's D. Third D. Right. It उसका conjugate base निकालना है, मतलब this species behaves as acid. That is, it gives H plus. तो अगर 2 plus में से H plus निकालूंगा तो +1 का तो चार्ज बचेगा. Yes, sir. Sir, can you explain again? Like मुझसे पूछा जा रहा है इस स्पीशीज का कॉन्जुगेट बेस बताना है, यानी कि ये स्पीशीज एसिड की तरह बिहेव करेगी. Yes, sir. दैट मींस H plus रिलीज करेगी. Yes, sir. राइट. अब H plus रिलीज करेगी तो यहाँ पर आप नोटिस करो ये H2O में से एक H plus रिलीज हो रहा है. तो अगर ये ओवरऑल +2 चार्ज का था तो ये +1 चार्ज तो बचेगा. चार्ज बैलेंस भी तो होना चाहिए ना.
Yes, sir. Yes. Understood. Done. Done, sir. ओके, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर करो. So C, we just did it. Yes, so C. Yeah. एक्चुअली यहाँ पर डिटेल्स भी नोटिस करना. OH minus is not amphiprotic. It can accept H plus, but giving H plus, you might feel like कि क्यों नहीं दे सकता, है तो सही इसके पास H. But OH minus giving H plus and forming O2 minus, why can't it happen? The answer is that yes, you are right to think ऐसा क्यों नहीं हो सकता है. However, we don't see it happening. Maybe because the K of such a reaction would be very, very small. So we don't put OH minus in the category of amphiprotic species. We just say it gives, it accepts H plus, but not give H plus. But how can we estimate what the K will be? No, you can't. That is what I'm giving you as the information now to think about it. अब जैसे H2PO2 minus है, तो H2PO2 minus कहाँ से आ रहा होगा? It comes from H2PO3 acid, hypophosphorus acid. Yes, sir. That hypophosphorus acid का, we know that the basicity was 1, like it could only give 1 H plus. So, ठीक है, how do we remember the H plus structure? दे दिया. अब it cannot give any more H plus. ये जो hydrogen attached है phosphorus से, they are not ionizable. So it cannot give H plus. It can only accept H plus back here. ठीक है. HSO3 minus. This is something which we spoke about. It can give H plus as well as accept H plus. So yes, it is amphiprotic species. HF again can give H plus. ठीक है, form H plus and F minus, but it is not accepting H plus. So, how do we draw the structures? So I don't. No, you don't draw the structure by yourself. That is why I helped you with the structure in the previous discussion that we did. That's why I made you write those notes. So would you recommend us to write these reasons? Recommend what? Should we write those reasons that you have written on the board, the structure and give it? Ha, of course. So we remember the structures, right? Yes. सर डी ऑप्शन का एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, वो क्या था सर? तो यहाँ पर अब जब हम HF को पानी में डालते हैं तो the tendency is for it to give H plus. ठीक है, not form. like जैसे H2O के बारे में हमने देखा ना कि H2O तो क्या करता है, H2O हाइड्रोनियम आयन भी बनाता है, एक्सेप्ट भी कर लेता है. ठीक है, we don't see that tendency happening over here. Like we don't see H2F plus being formed. Got it. ठीक है. So, as per electron, when we wait.
At the start of the class, we put HF in weak acids. Oh, we put in weak electrolytes, but is HF a weak acid? HF is a weak acid only. But then by electronegativity, it shouldn't, no? नहीं, in fact, HF, HCl, HBr, HI, this is the strength of acids. तो यहाँ पे जो bond strength है, that is the dominating factor rather than the electronegativity difference. So I don't think so. The electronegativity has that much of an. If you can compare acidic strength, but like the overall acidic strength is not affected by electronegativity. If you go left or right across a period. But you can compare, but it's not really a major factor, right? ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं पे क्लोज करते हैं. We need like more time for another topic at hand, but उसको मैं next class में cover करूँगा. Okay. Any questions? What are we doing tomorrow? What is what tomorrow? In doubt lecture, what are we doing tomorrow? The DPPs that you sent on Sunday. So DPPs. All the 40 to 43 one वाला. जितना भी होगा आपसे उतना दिख लेंगे, उतना कर So लेंगे. you can take doubts from the module now because you said you can solve it. मॉड्यूल से भी ले लेंगे, जो भी डाउट्स रहेंगे आप. Okay, sir. Okay. So can we decide a definite like exercise from the module if we're going to take? So let's say we take the DPP. So Should we take the DPP again? Yeah, we can do the DPPs for tomorrow. Yes, only the Yeah, DPPs. 3 of them are there. Like 4 are there. Sorry. Yes, sir. DPPs. हाँ, देख लेंगे, सब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. Suppose if DPPs finish earlier, and if we have There are solved 4 some that of don't have. FPS, can we do it? Can we FP or FPS? discuss it? सब कर लेंगे. I mean, FP. Okay, sir. If we decide as a definite thing because we have other So work. not If you DPP. finish DPPs, now do FPO. That's it. तुम्हारे जो भी डाउट्स है वो लेके आ जाना, वो डिस्कस कर लेंगे. Fine. You have a doubt lecture on Saturday also, so I think that. Yes. Most Yeah, likely. but that day might be we'll ask GOC, right, for exam. Whatever we doubts. That might not happen. I cannot give you a guarantee. तो आपके जो डाउट्स हैं वो पहले ही क्लियर कर लो. Okay. So what might not? Okay, sir. Saturday's session. Oh, okay. Why so? So that can we do thermo tomorrow a little bit? Thermo. हाँ बिल्कुल हाँ. देख लेना, कोई दिक्कत नहीं. I don't So have. so after DPPs, we'll take thermo then. हाँ देख लेना. Yes, sir. So I want the Saturday lecture won't happen maybe. Weather forecast सही नहीं है उसका. So what? Weather I was not going to tell us. So, but, I so asked just one him small if thing. he does. He said that he won't be taking organic. So you're going to be teaching at Dadar, I know. So this is not for me, but so I think what should other people tell their chem teachers when it opens, like where to start from? That will depend on the constitution or the composition of the batch. No? How the batch is. No, so they'll have to tell their teacher now where they ended. So what concept? हाँ तो most likely it will be start from ionic equilibrium only in case there is a discrepancy. But if it is not a discrepancy, then they can start from pH calculations. Yes. So we have one more class, so we'll finish up to pH calculations, right? हाँ. So and in offline, how many batches are there? ये तो depend करेगा. Usually, मतलब till before online started. मतलब like दादर में जैसे for example 4 बैच तो बनते थे एडवांस के. And how many children per batch? How many what? Children, students. Like 50 to 70 रहता था I think. And like one class is big enough to, for everyone to attend together. नहीं, people sit on each other's laps. अरे यार, so you always So that would be very interesting, sir. That is like we People sit on each other's laps. encourage You friendly. have to like make arrangements then. Yeah, so the person who's being sit on rides on the other person's back. No, we and then- swap. No, like it's What?
swing club we change from one to another. So we can make notes on each other's back, like put the paper there and start writing. Yeah. And the person uses the table. That makes sense. So, and in offline, do you use a projector or do you write on the board? No, it's like chalk and blackboard. I think Pace doesn't have no smart board. And those students who don't answer me, I like Throw the chalk at them. throw the chalk at them. I take that duster and like wipe it over their heads. So that must be very, very pleasant for you, right? It's very pleasant for- satisfying. It's pleasant for the entire class. Of course, Yeah, not, everyone laughs. not to the person who's being like subjected to it. No, sir. I'm not saying anything actually. ठीक है, हो गया तुम्हारा like nonsensical questions का end. So, how many days a week do we have class? As much as scheduled in the timetable. And we. So and, we know did we have 6 days a week of? Do we have classes every single day except Sunday, or do we have doubt classes as much as we did, or do we have like what do you call it? Like, do we have doubt lectures as much as we did? Like, we know we had some 6 to 9. There won't be any dedicated doubt lectures happening in the evening. Typically, it will be that post classes only. There will be a window of an hour or two where teachers would stay back, and those students who have doubts are requested to clear their doubts during that period itself and then go home. So are we allowed to eat at the center? Do we have to like step out? No, of course you have to bring your own dabbas and like eat. Like, I don't think the canteen would be open because of whatever reasons. Yeah. You can of course go out and eat. Generally, students bring their dabbas. Yes. So ACP sir said that they used to give punishments. Do you give any of those sorts? Yeah, the chalk, dust and all of that is there now. I know, but like he was like, sir, ACP sir was like he gets creative. No, matlab, I am not creative. I am more old school. So it has happened that I have thrown students from the first floor as well, if I get really annoyed and irritated. So you will see. Yes, sir. I'm just hoping I don't get thrown from the first floor in the first lecture. I hope our classes are at the ground floor. Yes. By the way, ground floor there are no take classrooms. you to the first floor and then throw you from there. So when is college? Matlab, Usually. College as in like HSC. अभी नहीं चल रहा कि तुम्हारा कॉलेज चल तो रहा है? No, offline. ऑफलाइन में पूछ रहा है. Yes. तो जैसे सब कुछ ऑफलाइन ही हो जाएगा थोड़े टाइम में. Like the college will also be in offline manner only. So this week's college timetable is so of only chemistry lectures. कब का? This week's college timetable has only chemistry lectures. You'll actually see the college timetable. Don't attend college, bro. Don't. It's a time pass. Like I was attending EM. Okay. No, but I was attending EM, and then I spoke to some person at the center who guides. I'm not going to take any names. And then she started arguing with me, why do you attend college? Don't attend college, and stuff like that. Even I stopped attending EM. Don't. You'll manage at the end. See, when you study EM, I know it's a little hard, but like thing is that when you read and learn it, it kind of develops your way of learning, understanding stuff on your own. Like I noticed that. Like it took me a while to understand EM, but like when you read and understand, when you read something, you train your brain to understand on its own. Like in class, so is explaining everything. That's not that much thinking of. So like you know, when you read EM, it kind of helps, and it helps understand. It's a 40-minute lecture, yaar. I didn't know it. You don't really end up learning a lot in that. Trust me.